Calculate the number of moles in 25.5 gram of sodium metal. And number of moles in 25.5 gram. This is given mass. Given mass of sodium is equal to 25.5 gram. Molar mass of sodium 23. Atomic mass of sodium 23. हाणे से ग्राम लगायूं तो इहो मोलर मास है या इनके हिन यूनिट में भी लिखूं था ग्राम पर मोल मोलर मास के ॿिन्ही सूरतुनि में लिखी सघे थो सिर्फ़ु ग्राम लगायो त इट्स अ मास ऑफ 1 मोल ऐं 1 मोल जे मास खे पाण मोलर मास चवंदा आहियूं 23 ग्राम पर मोल जो मतिलबु इहो आहे त 1 मोल वेज 23 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स खे एन सां था रिप्रेज़ेंट कयूं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कबा हाणे फार्मूला number of moles is equal to given mass upon molar mass. Number of moles is given mass 25.5 gram upon molar mass 23. So you take 1.108 mole and answer to you becomes the number of moles of Na sodium is equal to 1.108. This is the answer. Calculate the mass of 3.25 moles of water H2O. Mass of 3.25 moles. It is number of moles मिलेला है. N is the number of moles. 3.25 और मोल के शॉर्ट में MOL लिखी सके तो पूरी स्पेलिंग MOLE पर MOL था लिखूँ से शॉर्ट में MOL जो सिंबल है मोलर मास ऑफ H2O हाइड्रोजन जो मास है 1 तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन जो मास 16 ये टोटल थी पवंदो 18 मोलर मास के ग्राम लिखो या ग्राम पर मोल लिखो भाई हाणे गिवन मास फाइंड करणो आहे साॻियो फार्मूला इस्तेमालु थींदो गिवन मास फाइंड करणो हाणे फार्मूला साॻियो था रखूं पहिरियां नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इन खे इक्वेशन खे जेकर हीअं लिखूं पंहिंजी आसानी लाइ गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हाणे गिवन मास फाइंड करणो आहे त मोलर मास खे होॾां शिफ्ट कयूं हिते डिवाइड थो करे होॾां मल्टीप्लाई कंदो थी पवंदो गिवन मास is equal to N into molar mass and given mass is equal to N number of moles 3.25 into molar mass 18 and being multiply them तो answer is 58.5 ग्राम and answer के जेकर वरी लिखूं थी पवंदो mass of H2O is equal to 58.5 gram. This is our answer.